Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 5. The subject is science, unit number 4, lecture number 16, and the page number 34. Our today's topic is classification of living things. Students, I give you the introduction of this chapter. The word classification means the action or process of classifying something. I repeat the definition of classification: the action or process of classifying something. Living things. Living things are those which can move, can grow, needs air, needs food, needs water, and they can reproduce. We also learn the life functions of living things, that are movement, growth, food, respiration, waste, sensitivity, and reproduction. So here we learn about the classifications of living thing. Classification, in other words, is also called grouping something. Recall of this unit is living things are classified into different groups. लिविंग थिंग को दर्जाबंदी की जाती है मुख्तलिफ ग्रोहों में, ग्रुप्स में. टेरेस्ट्रियल मीन्स खुश्की पर रहने वाले, एक्वेटिक आबी, एम्फीबियंस जो बोथ वाटर एंड लैंड दोनों पर रहते हैं, वो आपके एम्फीबियंस होते हैं. एरियल फ़िज़ाई और हवाई, एंड आर्बोरियल मीन्स वो इन्वायरमेंट जहाँ पर ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं. डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट्स इन विच एनिमल्स लाइव. टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियंस, एरियल एंड आर्बोरियल डिस्क्राइब बयान करते हैं वो माहौल जहाँ पर जानवर रहते हैं. प्लांट्स ग्रो इन टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनवायरनमेंट. अब पौधे बढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों एनवायरनमेंट में, दोनों माहौल में. एनिमल्स में बी हर्बीवोर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स और पैरासाइट. जानवर होते हैं, हर्बीवर्स भी होते हैं, कार्निवर्स भी, ओमनिवर्स भी एंड पैरासाइट भी. We can define herbivores as an animal that feeds on plants. ऐसे animals जो सिर्फ plants खाते हैं, plants feed करते हैं, वो क्या है आपके पास? herbivores हैं. Carnivores are those animals that feeds on other animals. जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं, वो क्या है आपके? carnivores हैं. And the animals which can eat both plants and animals. ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, वो आपके पास क्या है? ओमनिवर्स हैं. और पैरासाइट the definition of parasite is an organism that lives in or on an organism species and benefits by driving nutrients and other expense. अब पैरासाइट वो हैं जो कि वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जानदार हैं जो कि दूसरे जानदार के जिस्म पर के ऊपर या अंदर रहते हैं, उससे बेनिफिट हासिल करते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. यू विल लर्न दैट, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, देयर आर 5 किंगडम ऑफ लिविंग थिंग्स. In this chapter, we will learn about the 5 kingdom of living things. Animals are subdivided. अब इस चैप्टर में आप जो किंगडम एनिमल हैं
इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल्स आर सब डिवाइडेड, एनिमल्स को मज़ीद तकसीम किया जाता है इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स को आगे जो क्लासीफाई किया गया है वो टू ग्रुप्स में किया गया है, दे आर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मीन्स दोज एनिमल्स हैव बैकबोन, ऐसे एनिमल जिनमें बैकबोन होती है वो क्या है आपके पास, वर्टिब्रेट्स हैं। एंड द इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव अ बैकबोन, उनमें बैकबोन नहीं होती, वो क्या है आपके पास, इनवर्टिब्रेट्स हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल्स हैं आपके पास मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिश। एंड द एग्जांपल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर ऑल इंसेक्ट्स एंड worms। इंसेक्ट्स में आपके पास मॉस्किटो, स्पाइडर, बी, beetle, etc. So, in this chapter we learn animals in animal kingdom जो है आपका, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। There are 5 classification of vertebrates। इसमें हम पढ़ेंगे कि वर्टिब्रेट्स को मज़ीद 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। दे आर मोर इनवर्टिब्रेट्स दैन वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट बहुत ज़्यादा हैं वर्टिब्रेट से ऑन अर्थ, ज़मीन पर। दे आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू, इन्हें क्लासीफाइड किया गया है, दर्जा बंदी किया गया है, टू हाउ देयर बॉडीज़ आर स्ट्रक्चर, कि इनके जिस्म की जैसे साख्त है उसके लिहाज से इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इंसेक्ट्स एंड worms आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। अब इंसेक्ट्स और जो worms हैं इनकी 2 डिफरेंट काइंड्स हैं इनवर्टिब्रेट्स में। एट पेज नंबर 34 आई स्टार्ट द रीडिंग। इन द 18th century, 18th century means 1700 to 1800, scientists started putting living things into certain groups। साइंसदानों ने लिविंग थिंग्स को ख़ास ग्रोहों में रखना शुरू कर दिया। एंड गिविंग दैम साइंटिफिक नेम्स, और उन्हें साइंसी नाम दिए गए। डैट कुड बी यूज्ड, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। आई अगेन रीड द पैराग्राफ। In the 18th century, scientists started putting living things into certain groups and giving them scientific names that could be used all over the world. This process is called classification. The other definition of classification is the action or process of classifying something is known as classification. In science, the first way in which living things are divided under the classification system is to place them into one of the 5 kingdom। साइंस में पहली दफ़ा क्या हुआ कि अंडर द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दर्जा बंदी के निज़ाम में लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया गया सिस्टम के तहत, दर्जा बंदी के सिस्टम के तहत 5 किंगडम में। लिविंग थिंग्स आप देख सकते हैं, इनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। वो किंगडम कौन कौन से हैं मैं वन बाय वन कॉल करती हूँ, यू कैन लिसन इट वेरी केयरफुली। प्रोटिस्टिस, हियर सी इज साइलेंट, प्रोटिस्टिस, प्रोकैरियोट्स, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स। I again repeat this: Protistes, prokaryotes, fungi, plants, and animals. In science, the first way in which living things are divided under the classification system is to place them into one of the 5 kingdoms. They are protistes, prokaryotes, fungi, plants, animals. Here are the examples of these. Protistes
amoeba, prokaryotes, bacteria, and some types of algae. Prokaryotes, in this, the membrane is not present over here, and the prokaryotes have an organism, they have no membrane around their nucleus, while the eukaryotes have membrane around their nucleus, like animals, plants, fungi, and protists. Fungi: mushrooms, molds, yeast. You can see the picture of mushroom, molds, and yeast. Plants: examples are all green plants, all green plants. Animals: all multicellular animals, all multicellular animals. इनमें humans and all multicellular animals आ जाते हैं. I again repeat this: protists, prokaryotes, fungi, plants, animals. आप इनको ऑर्डर में ही लर्न करेंगे, एंड इनको इजी लर्निंग के लिए आप इन्हें इस तरह भी लर्न कर सकते हैं: PPFPA, PPFPA. P stand for protists, prokaryotes, fungi, plants, and animal. You can also learn their examples as well. Answer these questions, student. This question is related to your today's topic. What do you understand by classification? आपको दर्जा बंदी से क्या समझ में आता है? And why do you think it is important? और आप क्या सोचते हैं कि ये क्यों अहम है? I repeat the question. Please listen very carefully. What do you understand by classification and why do you think it is important? The answer is classification means grouping or sorting things. दर्जाबंदी का मतलब है चीज़ों को सॉर्ट करना या ग्रुप करना. Scientists classify things to make their study easier and faster. साइंसदानों ने चीज़ों को क्लासीफाई इसलिए किया ताकि आसानी से वो स्टडी कर सके चीज़ों को आसानी से और तेज़ी से. Classification means grouping or sorting things. Scientists classify. Classification means grouping or sorting things. Scientists classify things to make their study easier and faster. Student, for your concern, I will repeat the question number 1 again. Please listen very carefully. What do you understand by classification and why do you think it is important? The answer of this question is classification means grouping or sorting things. Scientists classify things to make their study easier and faster. Our today's diary is reading page number 34. Learn and write question number 1. Student, question number 1, please write it on your notebook and read the page number 34 again and again. Watch the video again and again for your better understanding. Thank you so much. Allah Hafiz.